So solid stress is proportional to strain, but then fluid stress is proportional to strain rate. तो ये एक टर्म आपने याद रखनी है कि जो सॉलिड स्ट्रेस है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड फ्लूइड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन रेट. Next is what is fluid in a liquid molecules can move relative to each other, but volume remains relatively constant because of the strong cohesive force between the molecules. Now, if you want to differentiate between a liquid and a gas, तो लिक्विड एंड गैस के अंदर क्या है, इन लिक्विड मॉलिक्यूल कैन मूव रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के अलोंग मूव कर सकते हैं, लेकिन between these two these molecules are having strong cohesive forces that does not allow it to pass on. जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये लिक्विड है, इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट. अगर आप किसी इसको गिलास में डालेंगे पानी तो वो उससे में से बाहर नहीं निकलेगा. सिमिलरली आप किसी ओपन कंटेनर में अगर आप ऑक्सीजन डालेंगे, O2 डालेंगे, CO2 डालेंगे, तो वो उसमें से निकल जाएगी बाहर, राइट. एज अ रिजल्ट द लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज in and it forms a free surface in the larger container in a gravitational field. तो इसका एक free surface बनेगा. When you put a liquid in some container, the top surface will be there. जो उसका free surface कलर आएगा. Gas on the other hand expand until it encounter the wall of the container and will fill the entire well available. अगर आपने किसी कंटेनर में डाला है तो उसमें से बाहर निकलेगी वो, और जिस रूम में डाला है जहाँ जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक वो उसमें से भी बाहर निकलेगी, राइट, जब तक इसके कंटेनर के वॉल्स नहीं आ जाते. दिस इज बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन देम आर वेरी स्मॉल. तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फोर्सेस ऑफ कोहेजन आर वेरी स्मॉल. फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन, इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा. व्हाट इज फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड फोर्सेस ऑफ एडहेजन. इफ एनीबडी from you know what is forces of cohesion and forces of adhesion, you can explain it. Hanji, Harish, do you know that what is forces of cohesion and forces No of idea, adhesion? Yes or no? No idea, sir. No idea. Okay. Basically, forces of cohesion are between intermolecular attraction. Same molecule है, O2 plus O2, ऑक्सीजन की बात करें, O2 and O2. The forces of attraction between O2 and O2 is called forces of cohesion. And forces of adhesion are forces between a liquid molecule or a fluid molecule and a container. That is called forces of adhesion. दो फोर्सेस होंगी, एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, जो मॉलिक्यूल है लिक्विड है H2O की, H2O के साथ जो अट्रैक्शन होगी उसको हम फोर्सेस ऑफ कोहेजन बोलेंगे. और H2O की जो कंटेनर के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड फोर्सेस ऑफ एडहेजन, राइट. अनलाइक लिक्विड गैसेस कैनॉट फॉर्म अ फ्री सरफेस. तो लिक्विड का एक फ्री सरफेस बन जाता है, ऊपर का एक सरफेस फ्री आ जाएगा जिसके आगे वो बाहर नहीं निकलेगा, इतना वॉल्यूम फिक्स रहेगा. लेकिन गैस के ऊपर ऐसा नहीं होता है, फ्री सरफेस नहीं बनता. द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड अ गैस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड ऑफन रिगार्डेड एज इनकम्प्रेसिबल. तो लिक्विड जनरली हमारे जितने भी लिक्विड आएंगे दीज आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल. तो इट कैन बी कंप्रेस, वी कॉल इट इनकम्प्रेसिबल. कंप्रेस होते हैं लेकिन बहुत कम वैल्यू के साथ कंप्रेस होते हैं. And gases on the other hand, they can be compressed easily. The change of volume is large, cannot normally be neglected and are related to temperature. अब इसकी एग्जांपल क्या है कि ये कंप्रेस हो जाते हैं. आप LPG सिलेंडर्स घर में रहते हैं तो दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट. तो उसको लिक्विफाइड किया जाता है, कंप्रेस कर करके लिक्विड बना देते हैं गैस को, राइट. लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते to some extent. Occupies a fixed volume and will take the shape of the container. लिक्विड है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप में वो आ जाएगा. नो फिक्स वॉल्यूम, इट चेंजेस वॉल्यूम टू expand to
fill the container with fluid. तो फिक्स वॉल्यूम नहीं होता इसका, ठीक है। आप जिस कंटेनर में डालेंगे उसमें वो एक्सपेंड कर जाएगा। अगर आप कंप्रेस करके छोटे से कंटेनर में डाल देंगे तो छोटा हो जाएगा। अगर आप उसको ओपन करके किसी बड़े से रूम में डाल देंगे तो उस रूम में शेप ले लेगा। The free surface is formed if the volume of a container is greater than the liquid. अगर कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा है लिक्विड के वॉल्यूम के साथ तो उसका एक फ्री सरफेस बनेगी। फ्री सरफेस समझ आ गया आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री सरफेस। The top surface of a liquid is called free surface that is exposed to atmosphere. तो हम free surface बोलते हैं। As such, there is no free surface in case of air or gases, right? Completely fill the vessel so that no free surface is formed. Any doubt up to this? You can ask. Any doubts? Let's start with next slide. Application areas of fluid mechanics. Mechanics of fluid is extremely important in many areas of engineering and science. Examples are. और फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ कहाँ लग सकती है, कहाँ पे लगती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन एरियाज क्या है? तो पहले आप टर्न बाय टर्न आप बताते जाओ। यू आर आई थिंक 17। तो अजय पाल सिंह भी आ गया, वेरी गुड। आई डोंट एक्सपेक्ट अजय पाल टू अटेंड माय क्लास बट स्टिल ही इज हियर, आई वेलकम हिम। नाउ स्टार्टिंग विद अमरबीर, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे यूज होगा ये अमरबीर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर फ्लूइड मैकेनिक्स सर अपनी पाइप से वाटर फ्लो करता है ना हाँ जी सर, एक बार वो एप्लीकेशन है, एक हाइड्रोलिक्स या बस एक एक दसनी है, ठीक है। अरनपाल, व्हाट डू यू गिव सम एप्लीकेशन, कैन यू गिव सम एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स? fluid mechanics, for automobiles. Automobiles, you can say there is some lubricant oil that is being used Yes. to cool down the engine. Next, Arshdeep. नहीं सर, मुझे कुछ आ नहीं रहा सर याद। दिमाग में नहीं आ रहा, कोई गल नहीं। आशुतोष, you have some idea? सर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स? सर गाड़ी के पेट्रोल की टैंकी से इंजन। ओके गुड। हाँ जी दिलप्रीत, एनी आइडिया? सर एयर कंडीशनर, एसी सर। हाँ जी। सर जब डेंट पड़ जाता है सर उसमें नहीं सर? नो नो नो, जब फ्लूइड मैकेनिक्स इज ऑल scratch- अबाउट दैट कैन फ्लो। आप पानी के बारे में बात कर सकते हैं, एयर के बारे में बात कर सकते हैं, कहाँ पे यूज होती है। डेंट वगैरह में भी काम नहीं आएगा। सर जब ऑक्सीजन के लिए सर वो जो फिल करते हैं उसमें भी फिर यूज करते हैं। हाँ, सर एसी से भी वाटर निकलती है ना सर। मैकेनिक्स में डाल के। चलो हम अपनी वापस स्लाइड पे चलते हैं। So some of the applications are biomechanics. Biomechanics application. Blood flow through arteries and veins. हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन के अंदर मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। इट कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड इट रीचेस योर टो ऑफ आवर फुट। So how it flows? Because of pressure that is generated by the heart. So it is one of the application of fluid mechanics. Air flow in the lungs. We take in air, we exhale air. तो वो सारा प्रोसेस लंग्स का भी इट इज अगेन बायोमैकेनिक्स होता है जो हमारे बॉडी के रिलेटेड है। फ्लो ऑफ सेरेब्रल फ्लूइड, वी टेक इन वाटर, वी पास ऑन वाटर आल्सो, यूरिन पास करते हैं। द होल प्रोसेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमैकेनिक्स। नाउ हाउस होल्ड एप्लीकेशन जैसे किसने बोला था घर में पानी आता है हमारे,
सीवरेज का पानी बाहर जाता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज देयर, आप प्रॉपर उसका लेवल रखते हैं कि आप आपकी जहाँ पे सीट लगी है वहाँ से लेके फ्लो अपने आप बनता जाए और बाहर तक आ जाए, बाहर के जो मेन होल होता है वहाँ तक आ जाए सीवरेज का, और पानी बाहर से अंदर आ जाती है। टू टेक यूज अ पंप टू increase the pressure of water to rise to its tank that is located at the roof of your house, and then the pressure is generated and you can use that water for different household purposes. Piping system for cold water, natural gas and sewage. Piping and ducting network of heating and air conditioning. एयर कंडीशनिंग अब क्या होता है, तो जो बड़े बड़े हमारे होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, दे हैव सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो कहाँ कैसे फ्लो करता है वो कूलिंग सिस्टम, कैसे फ्लो करता है? जनरली हम देखते हैं जो सामने बैठा है पंखे के उसको हवा लगती है, बाकी को हवा ही नहीं आती। तो उसके अंदर भी इंजीनियरिंग लगती है सो दैट हर एक कॉर्नर में प्रॉपर एयर जाए, राइट। दैट इज प्रॉपर डक्टिंग ऑफ दैट। आप देखेंगे साइज उसका कम होता जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका साइज कम होता है। that is there is some equation that is called continuity equation that maintains the flow of water or flow of fluid same at every point. Then refrigerator, vacuum cleaner, dishwasher, washing machines, water meters, natural gas meters, air conditioners, radiators, यहाँ पे सब में somewhere fluid is being used. Meteorologists and ocean engineering. तो ओशन के अंदर जो करंट्स वगैरह बनते हैं वो टाइड्स एंड ऑल दैट, उसकी स्टडी में भी काम है। Then application areas of fluid mechanics and mechanical engineering. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ पे यूज होगा? डिजाइन ऑफ पंप, मैंने आपको बताया कि पंप यूज करते हैं हम प्रेशर बढ़ाने के लिए, पंप के अंदर यूज होगा। देन टरबाइंस, टरबाइंस भी आपने पढ़ा है, स्टीम टरबाइंस पढ़ी है, ये गैस टरबाइंस पढ़ी है। 6th सेमेस्टर में आप हाइड्रोलिक टरबाइंस भी पढ़ेंगे। तो टरबाइंस क्या है? दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी आपसे बात हुई थी, डक्ट कैसे बनती है, पहले बड़ी होती है, आगे जाते 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 छोटी होती जाती है। तो मेंटेन द एरिया और फ्लो प्रॉपर मेंटेन करने में। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एयरक्राफ्ट। अब आपने एरोडायनेमिक शेप के बारे में स्टडी किया होगा कि जितनी एक बॉडी के अंदर एरोडायनेमिक शेप ज़्यादा अच्छी होगी उतनी वो ज़्यादा फ्लो करेगी अच्छी, और इट विल गिव लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो हमारी एयर रेजिस्टेंस देती है वो उतनी कम रेजिस्टेंस देती है। तो दैट देयर इज अगेन अ यूज ऑफ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड aircraft design, our automobile design, right? Then civil engineering, transport of river sediments, pollution of air and water, design of piping system and flood control. तो सिविल की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया कि सीवरेज सिस्टम एंड ऑल दैट, वो सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। केमिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो भी हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, जो जैसे हमारे हॉस्टल है कॉलेज का, वहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलता है सारा, उसको ट्रीट करना है, दैट कम्स अंडर केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, वहाँ पे यूज होगा। आगे टर्बो मशीन्स, पंप, टरबाइन, फैन, ब्लोअर, प्रोपेलर्स कम्स अंडर टर्बो मशीन। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में ट्रांसफॉर्म करते हैं उनको हम टर्बो मशीन्स बोलते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, शिप, अंडर वाटर व्हीकल्स, डिस्पर्जन ऑफ केमिकल एजेंट। मिसाइल्स चलते हैं वो एयर में मूव करते हैं, सो दैट मिनिमम रेजिस्टेंस इज देयर, वैसी शेप बनाई जाती है एयरक्राफ्ट की, शिप की। अंडर वाटर व्हीकल्स या सबमरीन्स होते हैं वो सब मिलिट्री के अंदर आते हैं, डिस्पर्जन ऑफ केमिकल एजेंट। ऑटोमोबाइल आईसी इंजन्स, एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड फ्लो, एक्सटर्नल एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स शेप की वही बात कर रहा था मैं, दैट कम्स अंडर ऑटोमोबाइल। मेडिसिन के अंदर हार्ट असिस्ट डिवाइस, आपने सुना होगा दैट मेरे दिमाग से निकल गया, दैट वो पेसमेकर्स आर जस्ट टू ट्रिगर दी हार्ट टू गिव बीट, प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर बीट दे सके हार्ट, वो डिवाइसेस यूज की जाती हैं सो दैट प्रॉपर फ्लो इज मेंटेन। आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व,
आपको वॉल्व्स होते हैं, जो वॉल्व्स काम करते हैं, हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं, जो जो आप हार्ट पंप करता है तो ब्लड अंदर निकलता है, अंदर से बाहर निकलता है, तो वो अलाउ नहीं करता वापस हार्ट के अंदर जाने, तो वो वॉल्व्स चेंज होते हैं। दैट इज मैकेनिकल पार्ट ऑफ दैट, मैकेनिकल लगते हैं बाद में। And there are a number of these devices that are used in medicine also. Like convective cooling of generated heat. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हीट जनरेट होती है तो कन्वेक्टिव कूलिंग की जाती है। एनर्जी कंबस्टर, बर्नर्स, बॉयलर्स, गैस, हाइड्रो एंड विंड टर्बाइन। एनर्जी रिलेटेड टू गैस एंड हाइड्रो एंड विंड टर्बाइन। तो टर्बाइंस चलती रहती हैं, जैसे विंड मिल्स चलते हैं, विंड मिल्स, गैस हाइड्रो, जैसे जो यहाँ पे जो तारा वाला पुल है वहाँ पे टर्बाइंस पहले चला करती थी, वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए काम किया। टर्बाइंस को यूज़ किया जाता है टू रन आटा चक्की। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, पाइपलाइन पंप वेल ऑफशोर रिग ऑयल स्पिल। ऑयल एंड गैस, जो हम पेट्रोल डलवाते हैं, इट इज बीइंग फिल्ड विद द हेल्प ऑफ सम पाइप, तो कैसे फ्लो करता है, अगेन यू स्टडी विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, so you are not able to give answer for one or two, so I think these are 15 in number, so try to remember at least 10 to 12 applications of fluid mechanics. Almost everything in our world is either in contact with a fluid, or is it self of fluid. तो जो कुछ भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, या तो वो फ्लूइड का बना है या फ्लूइड के कंटेक्ट में है। इफ यू टॉक अबाउट आवरसेल्फ, ब्लड हमारे अंदर चल रहा है, तो पानी है, ब्लड है, दैट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग, तो देयर इज सम फ्लूइड मूवमेंट इनसाइड अस। एरोडायनेमिक शेप, देखो एरोडायनेमिक शेप की बात कर रहा था, अब मिसाइल की एरोडायनेमिक शेप और ऑटोमोबाइल की एरोडायनेमिक शेप। द नंबर ऑफ फ्लूइड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज enormous. Breathing, blood flow, swimming, pump, fans, turbines। अगर हम स्विम करते हैं तब भी फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होती है। विंड मिल चलते हैं, अब हवा चलती है तो विंड मिल चलता है, तो वो आगे काम करता है। There's again a use of fluid mechanics. Missiles, icebergs, engines, filters, jets, sprinklers। स्प्रिंकलर क्या होता है, जैसे हम ग्राउंड है हमारा, इसके अंदर पहले स्प्रिंकलर लगे होते थे, सेंटर से निकलते थे और गोल गोल घूम के पानी देते थे ग्राउंड को, तो दैट आर कॉल्ड स्प्रिंकलर्स, वो यूज होते हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट आइदर इज अ फ्लूइड और मूव्स विद इन और नियर अ फ्लूइड। तो कुछ भी ले लो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वहाँ पे उसके आसपास फ्लूइड मिलेगा ही आपको। So this is the two things: missile aerodynamics and automobile aerodynamics. Then this is high-speed train, a special shape where the fluid is flowing along this train. These are windmills, wind turbines that are used to run some autarky or say some water pumps, or you can use it for generation of electricity also. Or smoke from a stack. Smoke chimneys are there. These are also an example of fluid mechanics. It goes out, यहाँ से smoke प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे निकलता है, so it rushes to the top and then it is allowed to disperse out at the in the air. Pollutant dispersion over a city. So this is pollutant dispersion over a city. Application areas. This is the propeller. When propeller is when a ship moves on water inside some ocean, then a propeller is used to propel that ship. This is the image of that propeller.
It rushes water in the back end and ship moves in the forward direction. This is fan, and this is centrifugal pump, the pump that is being used to increase the pressure of your water at your home. पानी की टंकी भरने के लिए जो पंप यूज करते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, तो सोलू पंप बोलते हैं निकाल में. So this is the diagram of that. जेट इंजन प्रोपल्शन, जेट इंजन का जो जेट इंजन होता है हमारे एयरक्राफ्ट को, उसका प्रोपल्शन की इमेज है. क्रॉस फ्लो फैन, एक सिंपल फैन है, क्रॉस फ्लो दे रहा है. देन स्कीइंग जंपिंग एंड गोल्फ के अंदर अगेन यू यूज द fluid mechanics. Swimming, when you are swimming in water, again the fluid mechanics is there. Football, high pressure and low pressure regions are generated. When you are cycling, if the air is against you and when air is along you, there is a difference between cycling, IndyCar racing. Now classification of fluid flows. Classification of fluid flows. There are different types of fluids. Let us discuss between laminar and turbulent flow. Laminar flow and turbulent flow. The flow that is very silent, very silent. That particular flow is called laminar. Or when a layer moves above the layer, when one layer moves above the layer in a very smooth manner, then that particular flow is called a laminar. And if the flow is disorderly, it is very high and low tide, as that water flows in at high altitude, like in Himachal or somewhere in Kashmir. When water flows from that, you can see it is rising up and down. These are the three diagrams that you can see on your screen. The first one is the fluid is flowing, you cannot judge whether it is flowing or not, whether it is standstill or moving. And that particular flow is called laminar flow. It follows slides one over the other. The layers of the water slides one over the other very smoothly. Then you can see a very random flow of water, and it is rising up and down, rising up and down. And that particular flow is called turbulence. In between these two is called transmission. You cannot call it laminar, you cannot call it a pure turbulence. It is a combination of laminar and turbulence. So let us read this. Some flows are smooth and orderly, while others are rather chaotic or disorderly. The highly ordered fluid motion characterized by smooth layers of fluid is called a laminar. The flow of high viscosity fluids, such as oil at low viscosity, is typically laminar. Highly disordered fluid motion that typically occurs at high velocities and is characterized by velocity fluctuations is called turbulent flow. Okay. Any question in this regarding? If you have any question up to this, you can ask me. What is the difference between laminar and turbulent flow? No, sir. Let's start again. Law of low viscosity fluid, such as air at high velocity, is typically turbulent. The fluid that alternates between being laminar and turbulent is called transitional. तो laminar है, turbulent है, transitional है. तो laminar में purely it is very smooth flow, बहुत smooth flow होगा, and you cannot judge looking at it whether it is flowing or not, whether it is standstill or it is flowing or not. That particular flow is called laminar flow, and it is very random flow. ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, layers बन रही हैं ऊपर नीचे. And particular flow is called turbulent. A flow that is in between laminar and turbulent, it is called transitional flow. And fluid is said to be
आगे नेचुरल वर्सेस फोर्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फ्लूइड की. देन another classification is natural and forced flow. When a fluid is said to be natural or forced depending on the how the fluid motion is initiated. A forced flow, a fluid is forced to flow over surface or in a pipe by external means such as pump. जो हमारे घर में पानी आ रहा है, we force it to rush to rise over tank that is lying at the roof of our house. That particular flow is called forced flow. When it comes down from tank to our tap, then that the particular flow is natural flow. वो अपने आप आ रहे हैं, लेकिन नीचे से जब ऊपर भेज रहे हैं, that is forced by with the help of some pump. तो उसको forced बोलेंगे. Natural flow, any fluid motion is due to natural means such as buoyancy effect, which means manifests itself as the rise of warmer fluid and falls of the cooler. Solar hot water system, for example, thermosiphonic effect. There is an effect in our room. घर के अंदर होता क्या है? There is a natural tendency of hot air rises up and cold air falls down. When you use the fan, when we attach that fan to our roof, that what is the reason behind that is that hot air always rises up and cold air always settle down at the bottom. When you run that fan, that again that hot air is being pumped downwards so that a proper circulation is there, and that air will come down, and again that air will move up, so on, so that a process is balanced and room will keep on cooling down. So this is again a natural flow. Natural flow ये है कि जो हमारा जो हॉट है वो हॉट एयर है वो अपने आप ऊपर जाता है और कोल्ड एयर अपने आप नीचे आता है. देयर इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो, तो करंट बन जाता है. Solar hot water system, for example, the thermosiphonic effect is commonly used with heat pump by placing a water tank suspended above the solar panel. Steady versus unsteady flow. Again, first of all, we have studied about laminar and turbulent flow. Then we have studied about this natural and forced flow. Now steady and unsteady flow. A steady and unsteady flow is a flow is said to be steady. Steady flow है. आप एक नदी के पास बैठ गए एंड अगर आपने सुबह 9 बजे देखा कि the flow of water is around 3 cubic per second, and at the let's say at 3 p.m. you checked it again that the flow is same. अगर टाइम के साथ उसका फ्लो चेंज नहीं कर रहा है तो that particular flow is steady flow. टाइम के साथ उसका चेंज नहीं है. सुबह देखा तो सेम फ्लो है, दोपहर को देखा वही फ्लो है, और शाम को देखा फिर वही फ्लो है. Then that particular flow will be called as a steady flow. So opposite of that is unsteady. Unsteady is आपने सुबह देखा बहुत तेज पानी चल रहा था, दोपहर को स्लो हो गया, फिर शाम को देखा फिर बहुत तेज हो गया. So then that particular flow is called unsteady. There is another term that is uniform flow and non-uniform flow. वो भी देखते हैं, आगे नहीं है. A term uniform implies no change with location over a specified region. No term uniform implies no change with location. हमारा जो सपोज एक नदी है वो पीछे से हिमाचल से आ रही है, आपने हिमाचल से आगे देखा प्लेन सरफेस केम कहीं अनंतपुर साइड के पास देखा, तो वहाँ पे जो फ्लो है वो वाटर नदी के अंदर और ब्यास के अंदर आते आते जो फ्लो बन रहा है, तो अगर आप उस फ्लो को चेक करेंगे तो अगर वहाँ पे भी सेम फ्लो टाइम विद द लोकेशन के साथ अगर उसका फ्लो चेंज नहीं हो रहा है, जो प्रेशर वहाँ पे जो वेलोसिटी वहाँ पे है
वही वेलोसिटी अगर व्यास में मिल रही है तो दैट पर्टिकुलर फ्लो विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वो लोकेशन के साथ उसका फ्लो चेंज नहीं हो रहा है तो then that particular flow is called uniform flow। अगर लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। Next is properties of fluid। Any characteristics of a system is called as a property। हम